News Services Division of All India Radio presents Radio Newsreel. In this edition, campaigning for the first phase of Lok Sabha polls ends, voting in 91 constituencies to take place on Thursday. Central Bureau of Direct Taxes and Revenue Secretary meet Election Commission in New Delhi with regard to the ongoing income tax raids, and President pays homage to martyrs on the 54th Valor Day of the Central Reserve Police Force. Campaigning for the first phase of Lok Sabha polls ended this evening. Voting will be held in 91 constituencies spread over 18 states and 2 union territories in this phase on the 11th of April. All parliamentary constituencies of Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep, Telangana and Uttarakhand will go to the polls in this phase. Besides Assam, Bihar, Chhattisgarh, Jammu and Kashmir, Maharashtra, Manipur, Odisha, Tripura, Uttar Pradesh and West Bengal will also vote in the first phase. Simultaneously, voting for the single-phase assembly elections in Andhra Pradesh, Sikkim, Arunachal Pradesh and for 28 and 147 seats in Odisha will also take place on Thursday. In Chhattisgarh, Maoist-affected tribal Bastar constituency will go to the polls in the first phase. More than 1,800 polling stations have been set up. Out of these, 512 are identified as sensitive and 224 are hypersensitive. Elaborate security arrangements are in place to ensure free, fair and peaceful polling. More than 60 polling parties escorted by heavy contingent of security forces have already been sent to polling booths located in sensitive and hypersensitive areas. The polling parties for 72 polling stations situated in remote Maoist-affected regions have been airlifted by helicopters. Special DG Naxal Operations Girdhari Nayak said that a massive security cover has been provided for the smooth conduct of elections. छत्तीसगढ़ में चुनाव करना एक बड़ा चुनौती है। छत्तीसगढ़ पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेस अच्छे प्लानिंग किए हैं और ये समस्त प्रक्रिया को शांतिपूर्वक करने के लिए छत्तीसगढ़ के फोर्स और बाहर से आए फोर्सेस तैयार हैं। मतदान पार्टियों की सुरक्षा, ईवीएम की सुरक्षा ये सबसे अहम मुद्दा है और इसको ध्यान में रखते हुए समस्त अधिकारी कर्मचारी को निर्देशित किया गया है कि आवश्यक कार्रवाई करें। All political parties are campaigning at the top gear for the first phase as it ends this evening. Senior BJP leader and Prime Minister Narendra Modi addressed a rally at Latur in Maharashtra. In his first joint public meeting with Shiv Sena Chief Uddhav Thackeray, Mr. Modi told the gathering that he would not let the hard work go in vain and would return it with interest through development. He urged the first-time voters to choose the BJP to ensure that the poor get a home and water reaches the fields of farmers. Mr. Modi said that Congress and his ally NCP were standing with those who want a separate Prime Minister for Jammu and Kashmir. The Prime Minister said people's trust is his biggest accomplishment in the last 5 years. He also said his objective is to rid India of Naxal and Maoist menace. आतंक को हरा कर ही हम दम लेंगे, ये हमारा संकल्प है। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रवादियों के मन में हमने एक नया विश्वास जगाया है। घुसपैठियों की पहचान का हमने वादा किया था। ये बड़ा काम हम शुरू कर चुके हैं। नक्सलियों पर प्रहार और आदिवासी भाई बहनों तक विकास का लाभ पहुंचाने के लिए हमने दिन रात मेहनत की है। In Telangana, electioneering in 13 left-wing extremism-affected assembly segments will come to an end at 4 p.m. and in Nizamabad, where 185 candidates are in the fray, it ends at 6 p.m. as the polling time has been changed from 8 a.m. to 6 p.m. there. State Chief Electoral Officer Dr. Rajat Kumar said that about 2.97 crore electors will exercise the franchise on Thursday at 34,604 polling stations in all 17 Lok Sabha constituencies. BJP President Amit Shah addressed a rally at Shamshabad in Rangareddy district of Telangana and attacked the TRS government in the state. जो सरकार चुनने के बाद इतना बड़ा मैंडेट दिया, 2.5 महीने तक अपनी कैबिनेट नहीं बना पाए। 2.5 महीने तक जो व्यक्ति अपनी कैबिनेट नहीं बना सकता, वो तेलंगाना का भला नहीं कर सकता। In Odisha, a little over 60 lakh voters will exercise the franchise in 4 Lok Sabha constituencies and 28 assembly segments. The Chief Electoral Officer has taken strong steps for conduct of free and fair polling. Till yesterday, 8,513 non-bailable warrants had been executed in different districts. Liquor worth more than 3 crore 28 lakh rupees have been seized so far. As per guidelines of Model Code of Conduct, more than 3,93,000 hoardings at public places and 2,66,000 hoardings from private places have been removed. With Sudhanshu Dhada's report from Bhubaneswar, Tripti Srivastav,
In Uttar Pradesh, a correspondent reports that electioneering has reached its crescendo on the last day of canvassing. The CBDT chairman and the Revenue Secretary met the Election Commission in New Delhi today to discuss the ongoing income tax raids. CBDT Chairman PC Modi and Revenue Secretary AB Pandey were called by the Commission to explain the raids amidst allegations by the opposition that the ruling BJP was using enforcement agencies to target it ahead of the Lok Sabha polls. Incidentally, the Election Commission had advised all the enforcement agencies working under the administrative control of the Department of Revenue that the actions should be absolutely neutral, impartial and non-discriminatory. Earlier, Central Board of Direct Taxes (CBDT) had detected widespread and well-organized racket of collection of unaccounted cash of about 281 crore rupees in Madhya Pradesh through various persons in different walks of life, including business, politics and public service. In a statement, CBDT said, based upon credible information, Delhi Directorate of Income Tax initiated search and seizure action on a group in the National Capital Region Bhopal, Indore and Goa. CBDT said a part of the cash was also transferred to the headquarters of a major political party in Delhi. More from a correspondent. More than 300 IT officials participated in the operation at about 52 locations in 4 states on Sunday. CBDT said unaccounted cash of over 14 crore rupees has been found so far, besides over 250 bottles of liquor and few arms. The searches in Delhi have further led to seizures of incriminating evidence including cash book, recording unaccounted transactions of 230 crore rupees, siphoning of money through bogus billing of more than 242 crore rupees and evidence of more than 80 companies in tax havens. Several unaccounted and benami property at posh locations in Delhi have also been detected. With Dipendra Kumar, Sanjeev Jasrotia, Delhi. President Ramnath Kovind today paid homage to the martyrs at the National Police Memorial in New Delhi on the occasion of the 54th Valor Day of the Central Reserve Police Force CRPF. He also presented gallantry medals to 6 Jawans posthumously. Speaking on the occasion, Mr. Kovind said more than 34,000 police personnel have laid down their lives in the line of duty for the nation after independence. The President appreciated the role of CRPF in combating terrorism and separatism in Jammu and Kashmir. He said citizens of the country can move ahead on the path of development only in a peaceful atmosphere. भारत के विभिन्न पुलिस बल कानून का उल्लंघन करने वालों के दिल में डर पैदा करते हैं और कानून का पालन करने वालों को भयमुक्त रहने में मदद करते हैं और इस प्रकार एक शांत, खुशहाल एवं समृद्ध राष्ट्र के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। शांति के वातावरण में ही देशवासी विकास के कामों में अग्रसर हो पाते हैं। The President said on this day, 9th of April in 1965, a small contingent of the 2nd Battalion of the CRPF successfully fought and repulsed an attack by a Pakistani brigade at Sardar Post in the Run of Kutch in Gujarat. They eliminated 34 Pakistani soldiers and captured 4 soldiers alive. Senior BJP leader Rajnath Singh has said there will be no option with the government other than abolishing Articles 370 and 35A of the Constitution related to special status to Jammu and Kashmir if any party or leader talks about having a separate Prime Minister for the state. Mr. Singh addressed a rally at Suchetgarh in Jammu in favour of party candidate Jugal Kishore Sharma yesterday. Mr. Singh asked the Congress to clarify its stand on such demands. भारत में होने वाले अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए जितनी भी सख्ती करनी होगी हम वो सख्ती करेंगे, लेकिन घुसपैठ को पूरी तरह से रोकेंगे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को हम संसद के दोनों सदनों से पास कराएंगे और उसे हम लागू करेंगे। The Supreme Court has dismissed a petition seeking stay on the release of biopic on Prime Minister Narendra Modi. The Apex Court said the petition is premature as the censure board has not yet certified the movie. The Apex Court bench comprising Chief Justice Ranjan Gogoi and Justices Deepak Gupta and Sanjeev Khanna said that even if the film is released on April 11th, it will be appropriate for the petitioner to seek a redressal from the Election Commission. With that, we end this edition of Radio Newsreel, edited and produced by Manmohan Joshi, assistance in production by Mukesh Kumar, your narrator, Abhishek Mukhopadhyay.
नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या दोस्तों। स्वागत है आपका अपने ही कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। अगले 15 मिनट खेल जगत की ढेर सारी खबरें होंगी, उन पे चर्चा भी करेंगे। स्वीकार कीजिए लवली निगम का नमस्कार। और खेल खबरों पे चर्चा के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है खेल पत्रकार जयदीप घोष को। जयदीप नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद लवली जी। तो जयदीप, आईपीएल का जो मैच चल रहा है आज चेन्नई और कोलकाता के बीच, तो कोलकाता पहले बैटिंग कर रहा है और बहुत हालत खराब है उनकी, लग रहा है चहर का कहर जो है उन पे टूट पड़ा है। जी हाँ, दीपक चहर ने 3 विकेट निकाल दिए, शायद 29 रन है 6 ओवर में, 4 विकेट पे। तो ऐसे तुम्हें तो लगता नहीं कि बहुत बड़ा टारगेट खड़ा कर पाएंगे। और चेन्नई का जो फॉर्म है वो काफ़ी लाजवाब है अभी। तमाम खबरों पे चर्चा करेंगे। पहले सुर्खियां। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से जारी। एशियाई चैंपियन गोला फेंक खिलाड़ी मनप्रीत कौर के नमूने को 4 बार पॉजिटिव पाए जाने पर नाडा ने 4 साल के लिए उन्हें प्रतिबंधित किया। किनन चेन्नई आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी पुरुष ट्रैप स्पर्धा में 12वें नंबर पर रहकर पदक की दौड़ में बने हुए हैं। और सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से शुरू, मुख्य मुकाबले कल से। शुरुआत यहीं से करते हैं जयदीप, इंडियन प्रीमियर लीग, जहां इस समय चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीता है। कोलकाता नाइट राइडर्स को पहले बल्लेबाजी करने को कहा है। और जैसे अभी हम जिक्र कर ही रहे थे, कोलकाता के जो हैं 6 ओवर हुए हैं, सिर्फ 29 रन टंगे हुए हैं स्कोर बोर्ड पे और 4 खिलाड़ी उनके आउट हो चुके हैं। और वैसे अगर टेबल देखें हम, दोनों टीमों के 8-8 अंक हैं, लेकिन बेहतर रन रेट के आधार पर कोलकाता तालिका में ऊपर है। चेन्नई की अभी बात कर रहे थे, न सिर्फ इस सीजन में, चेन्नई तो अभी तक 12वां आईपीएल चल रहा है, वो तो है ही हमेशा टॉप पे। हाँ देखिए, चेन्नई ऐसी टीम है कि किसी भी आईपीएल में, चाहे वो चैंपियन हो चाहे ना हो, परफॉर्मेंस उनकी कभी इतनी बुरी नहीं होता कि लगता है, जैसे आप देखें आरसीबी की हालत देखें, 6 मैच हार के बिल्कुल ही हालत ख़राब है। चेन्नई अगर एक मैच हार जाती तो बड़ा लगता है कि बड़ा अजूबा हो गया कि चेन्नई हार गई। और एक्सपीरियंस बहुत है, कप्तान लाजवाब हैं, उनसे अच्छा कप्तान तो लिमिटेड ओवर्स में कोई है ही नहीं। और उनके जो परफॉर्मेंस है ना, जो जूनियर प्लेयर आप देखें, दीपक चहर आए, उनको उन्होंने नई बॉल पकड़ा दी, उन्होंने क्या रिटर्न्स दिए उनको। तो कॉन्फिडेंस की बात है, फॉर्म ठीक हो, कॉन्फिडेंस कैप्टन देता रहे कि ऐसे करना है, ये हमारा प्रोग्राम है, तो उसमें असर बहुत दिखाई देता है। उसी तरह वो कलकत्ता को देख लें, उनको ने देखा चेन्नई से खेलना, उनको पता था बॉलिंग अटैक चेंज होने वाली है, कुछ ना कुछ धोनी ज़रूर करेंगे। उन्होंने कुछ चेंज नहीं किया, कोई चेंज नहीं, वही क्रिस लिन और सुनील नारायण को ऊपर भेज दिया, फेल हो गए, दोनों फेल, ऊपर से 2 बैट्समैन और फेल हो गए। तो इसमें थोड़ा सा फेरबदल करना ज़रूरी होता है, नहीं तो एक ही आप वही लकीर के फकीर बने रहोगे तो कहीं ना कहीं नुकसान होना ही। और फिर धोनी जैसा कैप्टन, वहाँ तो आपको थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स जिसे कहते हैं ना, जो उतना कर सकता है आप उसका 50% ही कर लें, बहुत बड़ी बात जी। आगे चलें, कल रात जो मोहाली में मैच हुआ, किंग्स 11 पंजाब सनराइजर्स हैदराबाद को हरा दिया। किंग्स 11 पंजाब ने 4 विकेट पर 151 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। केएल राहुल ने शानदार 71, मयंक अग्रवाल ने 55 रन बनाए। सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 150 रन बनाए थे। और कल भी जयदीप मुंबई इंडियंस का सामना होगा किंग्स 11 पंजाब से। ये मैच रात 8 बजे खेला जाएगा। इस पर पहले फरहत की रिपोर्ट सुनते हैं, फिर दोनों ही मैचों पे चर्चा करेंगे। 3 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस की टीम उतार चढ़ाव से गुजर रही है। मुंबई ने पिछले 5 मैचों में 3 जीते और 2 हारे हैं। वह 6 अंक लेकर 5वें नंबर पर है, जबकि किंग्स 11 पंजाब ने 6 मैचों पर 4 जीते और 2 हारे हैं। 8 अंक लेकर वे अभी तीसरे नंबर पर है। मौजूदा सत्र में पंजाब की टीम मुंबई को मोहाली ग्राउंड पर 8 विकेट से हरा चुकी है। टीम का प्रदर्शन टूर्नामेंट में अब तक संतोषजनक रहा है और वह चाहेगी कि इस लय को बरकरार रखे। पंजाब के पास गेंदबाजों और बल्लेबाजों का अच्छा संयोजन है। कप्तान और अनुभवी ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन गेंदबाजी क्रम की अगुवाई कर रहे हैं। उनके अलावा सैम करेन और मोहम्मद शमी भी काफी सफल साबित हुए हैं। उधर मुंबई ने मौजूदा चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर शानदार शुरुआत की थी। दोनों जीत मुंबई की हरफनमौला गेंदबाजी और कम स्कोर को बचाने के गेंदबाजों के हुनर के दम पर मिली। मुंबई के पास जसप्रीत बुमराह और जॉसन बेहरेनडोफ जैसे तेज गेंदबाज हैं, जिनका साथ देने के लिए जोसेफ और हार्दिक होंगे। टीम में वेस्टइंडीज के किरोन पोलार्ड और हार्दिक पांड्या जैसे धुरंधर बल्लेबाज भी हैं। फरहत नाज, स्पोर्ट्स कैन। इसकी मुंबई और किंग्स 11 पंजाब की बात की जाए जयदीप, 3 बार की चैंपियन मुंबई है। उधर पंजाब एक पहले खिताब की तलाश में है, लेकिन इस बार देखा जाए तो पंजाब कंपैरेटिवली आपको लगता है बेटर कर रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। मुझे लगता है कि अश्विन की कप्तानी में इन्होंने काफ़ी चेंजेस दिखाए हैं, सुधार बहुत है। क्या था, पहले पंजाब लगती थी कि 11 प्लेयर को इकट्ठा करके फील्ड पे उतार दिया गया, सब अपना अपना खेल रहे हैं। अब लगता है कि टीम खेल रही है, क्योंकि उसमें होता है कि कप्तान के बड़े उसमें असर बहुत होता है उसका। कैप्टनसी उनकी अच्छी है, उनकी टैक्टिक्स अच्छी हैं, बॉलिंग खुद अच्छी कर रहे हैं,
तो वो कॉन्फिडेंस आई जाती टीम को है। यूनाइट करने जी हाँ, के लिए टीम को रहता यूनाइट करने के लिए थोड़ा सा स्ट्रांग लीडर चाहिए होता है, और वो अभी शायद पंजाब को पहली बार काफ़ी दिनों में मिला है। है। जी और रही बात मुंबई की, मुंबई का ऐसा है कि मुंबई अभी थोड़ा सा मिडिल लेवल पे चल रही है, कुछ डावाडोल सी स्थिति है उसकी, क्योंकि जीत रही इनके है, टॉप हार ऑर्डर रही में है। स्पेशली आप देखें रोहित शर्मा के रन बन नहीं रहे हैं, तो थोड़ा सा उसमें उनको कंसंट्रेशन की इश्यूज है। पिछला मैच भी कोई बहुत अचीवमेंट से नहीं हारे थे, वो सनराइजर हैदराबाद ने सुसाइड करके उनको मैच कंसीड कर दिया था। बेसिकली वहाँ के गेंदबाज तो अच्छे हैं और बॉलर अच्छे हैं, जी हाँ, का पता ही नहीं चल पा रहा है अभी गहराई। बॉलर्स अच्छे हैं, लेकिन अगर आप 130 140 का टारगेट दो तो चाहे आपसे के पास दुनिया में सबसे अच्छी अटैक रहे, वो डिफेंड करना हर बार नहीं हो सकता है। जी लेकिन मुंबई एट होम बहुत स्ट्रांग है, तो मुझे लगता है कि उनका चांस अच्छा है। उधर जो कल मैच हुआ था हैदराबाद और पंजाब जी। का, हैदराबाद की टीम ने एक अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन अब आपको लग रहा है कि थोड़ा लवलीन जी, हैदराबाद की प्रॉब्लम है कि हैदराबाद के 2 बल्लेबाज आप ऊपर के निकाल दो, डेविड वार्नर और जॉनी बेस्टो को, तो बाकी के रन ही नहीं बनते, क्योंकि बाकी जो बैट्समैन हैं पहले तो 2-3 मैच में उनकी, पहले 3 मैच में 3 सेंचुरी पार्टनरशिप ओपनिंग, तो उनकी किसी की बारी नहीं आई, और जब बारी आई तो उनको ये नहीं पता कि वो खेलें कैसे, कि कैसे स्कोर बनाया जाए, आगे बढ़ाया जाए। टारगेट खड़ा नहीं कर पा रहे हैं, फिर अगर टारगेट खड़ा ना हो उसके बाद चाहे आपके जितने अच्छे बॉलर हो, रशीद खान हो, जो भी हो, वही बात हो रही है जो मुंबई के साथ हो रही है कि आपके पास बॉलिंग चाहे लाजवाब हो, अगर आप 140 का टारगेट दोगे 20 ओवर 20 मैच में, तो डिफेंड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक बात जयदीप, हमने देखी अभी तक के आईपीएल में कि बॉलर्स भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करे। अमूमन क्रिकेट को जो बोलते थे कि बैट्समैन गेम है और ज्यादातर बैट्समैन के ही वो देखे टारगेट कम भी है, बॉलर्स बहुत अच्छा प्रदर्शन या कर 2 रहे हैं। चीज़ें हैं, एक तो है बॉलिंग अटैक्स टीमों की काफ़ी कंबाइंड कॉम्बिनेशन अच्छी है, दूसरी बात है कि सीजन के एंड में अगर आप इन पिचों पे खेलेंगे, इनको टायर्ड पिचेस कहते हैं, सारी डोमेस्टिक क्रिकेट हो गई, सब कुछ हो चुका है, सब कुछ सीजन खत्म होने का, गर्मी आ गई है, वो जाड़े से गर्मी में जो ट्रांजिशन होता है, ज़मीन टूट रही है, आप पिचेस देखिए कि 40 ओवर के अंदर अंदर टूट जाती हैं पिचेस, बॉल आ नहीं रही है, अनइवन बाउंस है, कभी स्विंग हो रही है, कभी नहीं हो रही है, तो इसमें स्कोर करना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल फ्लैट पिच हो तो आप 200 बना लें, नहीं तो अदरवाइज फिर वही 130 40 50 की बात आ जाती है। जी फुटबॉल की बात करें, भारतीय महिला फुटबॉल टीम मेजबान म्यांमार के साथ 3-3 गोल से ड्रॉ खेली। इस ड्रॉ के बाद भारतीय टीम ने 2020 ओलंपिक क्वालिफायर्स के तीसरे दौर के लिए क्वालिफाई करने का मौका गंवा दिया है। मेमोल रॉकी की कोचिंग वाली भारतीय टीम को ओलंपिक क्वालिफायर्स राउंड 2 के ग्रुप ए में शीर्ष पर रहने के लिए ये मैच जीतना जरूरी था, लेकिन 2 बार बढ़त बनाने के बावजूद उसे ड्रॉ से संतोष करना पड़ा। भारत और म्यांमार दोनों ने 3-3 मैचों में 7 अंक हासिल किए, लेकिन म्यांमार की टीम बेहतर गोल अंतर के कारण तीसरे दौर में जगह बनाने में सफल रही। प्रत्येक ग्रुप से केवल एक टीम ने तीसरे दौर के लिए क्वालिफाई किया। संध्या रंगनाथन ने 10वें मिनट में गोल करके भारत को बढ़त दिलाई, लेकिन म्यांमार की तरफ से हैट्रिक बनाने वाली विन तुन ने 17वें और 21वें मिनट में गोल करके म्यांमार को आगे किया। भारत की तरफ से संजू ने 32वें मिनट में भारत को बराबरी दिला दी। दूसरे हाफ के शुरू में म्यांमार ने दबदबा बनाया। हालांकि भारत की तरफ से रतन बाला ने 64वें मिनट में गोल करके स्कोर 3-2 किया, लेकिन इसके 8 मिनट बाद तुन ने अपनी हैट्रिक पूरी करके स्कोर बराबर कर दिया। भारत के पास 76वें मिनट में गोल करने का सुनहरा अवसर था, लेकिन म्यांमार की गोलकीपर ने डांग मेई ग्रेस का शॉट भी गोल लाइन पर रोककर भारत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। नईम अख्तर, स्पोर्ट्स स्कैन। जब दूसरे दौर में आई थी, तीसरे दौर के लिए नहीं क्वालिफाई कर पाई, तो कहीं उम्मीद आपको लगी थी? हालांकि भारतीय महिला फुटबॉल टीम से वहां तक क्वालिफाई करना तो एक बहुत बड़ी उम्मीद वो करना था, लेकिन हमने अच्छी खासी बढ़त बना ली थी। उसके बाद ड्रॉ, एक वही प्रॉब्लम, चाहे हॉकी हो चाहे फुटबॉल हो, जो हमारी टीम। देखिए, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे हिसाब से मेंटल प्रॉब्लम होती है कि टफनेस बोले उसे, मेंटल टफनेस कहीं, स्टैमिना तो खैर देखिए, स्टैमिना का ऐसा है कि म्यांमार और हमारे में स्टैमिना का फर्क इतना नहीं हो सकता, मैं मानने को राजी नहीं हूँ। इनफैक्ट हमारे प्लेयर ज़्यादा फिट होने चाहिए। मुझे लगता है ये मेंटल मेकअप की बात है कि आपने 2 की लीड बना ली, 3 की लीड, ये एक गोल की भी लीड बना के इंडियन टीम्स की काफ़ी, हॉकी में जैसे आपने कहा, फुटबॉल में देखा है कि डिफेंड करना टेरिटोरियल, या आप उसको टॉप ऑफ द बॉक्स से सारा डिफेंड कर, ऐसे कोई फील्ड गेम ऐसे नहीं खेला जाता है। आपको अगर कंसोलिडेट करना है तो आपको मिडफील्ड पकड़ के रखना पड़ेगा, बॉल पोजीशन रखनी पड़ेगी और काउंटर अटैक पे खेलें। अगर आप लीड पे हैं तो आप उनको जगह दें, फिर काउंटर अटैक पे खेलें। लेकिन अच्छी बात यह है कि 3 गोल स्कोर किए, बुरी बात यह कि 3 गोल खाए भी। तो अब आप देखें तो उसका यही होता है कि अगर आप एंड ऑफ द डे हम क्वालिफाई नहीं कर पाए। जी हाँ, सबसे बड़ी बात वही है। और लीड आपने बनाई, 2 बार बनाई, 3 बार बनाई, उसके बाद फिर कंसीड कर दी, तो इसका मतलब ये है कि आपके डिफेंस में कुछ खोट है या तो फिर आपके टैक्टिक्स में कुछ प्रॉब्लम है। जी
अब एक और खबर जो कहीं ना कहीं कहें कि हमारे लिए शर्मिंदा होने वाली बात है। एशियाई चैंपियन गोला फेंक खिलाड़ी मनप्रीत कौर के नमूने को 4 बार पॉजिटिव पाए जाने के बाद नाडा ने 4 साल के लिए उन्हें प्रतिबंधित कर दिया है। नाडा के डोपिंग रोधी अनुशासनात्मक पैनल के मुताबिक प्रतिबंध की शुरुआत 20 जुलाई 2017 से होगी और जयदीप इसका मतलब ये है कि मनप्रीत को 2017 में भुवनेश्वर में हुए एशियाई चैंपियनशिप में मिले गोल्ड मेडल, राष्ट्रीय रिकॉर्ड और इसके अलावा भी और भी जो बहुत सारे टूर्नामेंट हुए थे, चाहे फेडरेशन कप हो, चाहे एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप हो, सब वो गंवाने पड़ेंगे और जाहिर तौर पर ये खबरें बहुत शर्मिंदा करती हैं। लवलीन जी, अब क्या बताएं, इसका आप देख ही रहे हैं कि हमारे एथलेटिक्स में ऐसे जो केस हैं, आप देखें तो साल में 2-4 निकल ही आते हैं जी। और टॉप लेवल के एथलीट, ये भी नहीं कि कोई एस्पायरिंग एथलीट है तो गलती, जिनको कि पता होना चाहिए कि इस लेवल पे क्या करना है क्या नहीं करना, उनको अगर लगता ही नहीं कि इसको ये कोई इशू है और करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर अब क्या बोला जाए, उसका तो कोई जवाब फिर मिलनी भी चाहिए। तो सजा तो होनी। अब जानकार को क्या जानकारी दोगे, उसका तो कोई इलाज नहीं। लेकिन आप देखिए, जैसे एक और खिलाड़ियों के नमूने राष्ट्रीय डोप जांचा प्रयोगशाला में जो मामलों में वृद्धि हो रही है लगातार, इस बार साल की शुरुआती 2 महीनों में ही 57 नमूने पॉजिटिव पाए गए हैं, यानी 3.6, जबकि इससे पहले 1.8 1.6 होते थे। तो ये जानकारी नहीं है खिलाड़ियों की कि कौन कौन सी दवाएं प्रतिबंधित हो रही हैं या क्या होता क्या है कि यहाँ पे एक मेंटल मेकअप है कि अगला जो बड़ा इवेंट आ रहा है, टोक्यो ओलंपिक्स आ रहे हैं 2020 में जी, उससे पहले जिस को क्वालिफाई करना है, उनमें से जिन को लगता है कि वो अपने बलबूते पे नहीं कर पाएंगे क्वालिफाई, ये कर लो, उसके बाद मास्किंग एजेंट के लिए चले जाएंगे किसी रिपब्लिक में, जाके करा के आ जाएंगे और इनको लगता है किसी को पता ही नहीं चलेगा। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी इसमें है, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी इसमें है कि हर बार पकड़े जाते हैं। हर साल आप जैसे देख रहे हैं, इतने प्लेयर्स के केस यहाँ चल रहे हैं, इनको तब भी नहीं लगता, इनको तब भी लगता है कि हम निकल जाएंगे। अब ये पता नहीं कौन समझाता है और कैसे समझाता है, अपनी अकल तो ये इनकी हो नहीं सकती। कीनन चेन्नई संयुक्त अरब अमारात में ISSF विश्व कप निशानेबाजी के दूसरे दिन पुरुषों के ट्रैप स्पर्धा में 12वें नंबर पर हैं। पदक की होड़ में बने हुए कीनन ने 50 में से 49 सटीक निशाने लगाए। उन्हें भी 3 और राउंड में उतरना होगा। उनके साथ ही टूर्नामेंट में तीसरे भारतीय पृथ्वीराज तोडाईमान ने 48 का स्कोर किया, जबकि जोरावर संधू का स्कोर 47 रहा। RN ये जो विश्व कप जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें कुल 8 कोटा जो हैं वो दाव पर हैं। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन की बात करें, टूर्नामेंट हालांकि आज से शुरू हो गया है जयदीप, लेकिन मुख्य मुकाबले कल से खेले जाएंगे। महिला सिंगल्स कल पहले दौर में PV सिंधु खेलेंगे इंडोनेशिया की लाइनी अलेजांद्रा मेनाकी से, साइना नेहवाल इंडोनेशिया की यूलिया यूसुफिन सुसांतु से और एक अन्य मैच में मुग्धा का सामना होगा थाईलैंड के पोनपावी चुकुवांग से। पुरुष सिंगल्स में P कश्यप होंगे, किदाम्बी श्रीकांत होंगे, समीर वर्मा होंगे, B साई प्रणत, HS प्रणय। PV सिंधु की अगर बात करें, अपने पुराने अनुभव को जो अभी हार गई थी, बिल्कुल शुरुआती मैच में हार गई थी इंग्लैंड ओपन में जी, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि उसको भुला के फिर इस टूर्नामेंट में आएंगी, या ये सिंगापुर ओपन इतना उस लेवल का नहीं है? नहीं, सिंगापुर ओपन काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट है, एशिया में टॉप टूर्नामेंट्स में से ये गिना जाता है। इसमें यही बात है कि अगर आप वही है टॉप लेवल प्लेयर्स में, अगर आप पिछले हार की ही सोचते रहेंगे, फिर आगे जाने का कोई चांस नहीं है। प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, उम्मीद तो यही होती है कि आगे की तैयारी करके जाएंगे, गलतियां पीछे जो हुई उसको देख के, लेकिन थोड़ा सा फॉर्म उनका डामाडोल लग रहा है, जाहिर है। और साइना का तो लग ही रहा है कि फर्स्ट राउंड में 2-3 बार हार चुकी हैं। तो अब ये बात है कि इसके बाद ड्रॉ के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कौन आप सामने आता है, लेकिन जो टॉप लेवल प्लेयर्स हैं उनको फिर अगर आप टॉप लेवल हैं तो आपके सामने टॉप लेवल प्लेयर ही आएंगे और उन्हीं को हरा के आप टॉप पे पहुंचेंगे, तो उसके लिए कोई डिबेट तो है नहीं। आपको पूरी तैयारी करके जाना एंड देन होप फॉर द बेस्ट। और इधर P कश्यप और मुग्धा अग्रे ने जो है आज क्वालिफाई किया। पुरुष वर्ग में आपको लग रहा है कि P कश्यप के किदाम्बी श्रीकांत की बात करें कि कोई ऐसा खिलाड़ी जो अच्छा प्रदर्शन करे? देखिए, मुझे उम्मीद तो श्रीकांत से लगी रहती है कि परफॉर्म अच्छा करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे लगता है वो जो कंसिस्टेंसी बीच में आ गई थी इंडियन बैडमिंटन में 2-3 साल पहले, वो थोड़ा सा फिर नीचे आने लगी है। और चलते चलते एक और ये बता दें कि कितना ताज़ा समाचार मिलने तक कोलकाता ने बना लिए हैं 9वें ओवर में 4 विकेट पे 40 रन। कोई बहुत अच्छा लग नहीं रहा है फिलहाल कि वो टारगेट दे पाएंगे। कुछ ओस फैक्टर भी वहाँ कुछ काम कर रहे हैं क्या? वो थोड़ा बहुत है, लेकिन ग्रिप कर रही होगी पिच। वो पिच पे मैं जैसे कह रहा था, उसमें टूटने लग जाए उसके बाद बैटिंग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसमें 120-30 का टारगेट भी बहुत चैलेंजिंग हो सकता है चेन्नई के लिए। तमाम खबरों पे आपसे चर्चा की। जयदीप, आप स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और लिसनर्स, हम आपसे यही इजाज़त चाहेंगे, कल फिर मिलेंगे। फिलहाल नमस्कार, शुभ रात्रि। नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या।
लोकसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार संपन्न, मतदान बृहस्पतिवार को। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए निर्वाचन अधिकारी पूरी तरह मुस्तैद। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में नक्सली हमले में भाजपा विधायक भीमा मंडावी और 4 सुरक्षा कर्मियों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले की निंदा की। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे की ब्रेक्जिट समय सीमा बढ़ाने के लिए जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल से बातचीत। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला चेन्नई में जारी। समाचार संध्या के साथ मैं चंद्रिका जोशी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार अभियान आज शाम समाप्त हो गया। इस चरण में 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 91 सीटों के लिए 11 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, तेलंगाना तथा उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप की सभी संसदीय सीटों के लिए मतदान होगा। इसके अलावा असम, बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी पहले चरण में वोट पड़ेंगे। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश विधानसभा की सभी सीटों और ओडिशा विधानसभा की 147 में से 28 सीटों के लिए भी बृहस्पतिवार को मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में माओवादी समस्या से प्रभावित बस्तर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में भी पहले चरण में वोट डाले जाएंगे। मतदाताओं की सुविधा के लिए 1800 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 512 मतदान केंद्र संवेदनशील और 224 अति संवेदनशील घोषित किए गए हैं। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरह से चुनाव संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। चुनाव कर्मियों के 60 से अधिक दल सुरक्षा बलों की कड़ी निगरानी में संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों में भेज दिए गए हैं। माओवाद प्रभावित 72 निर्वाचन क्षेत्रों में हेलीकॉप्टरों के जरिए चुनाव कर्मियों के दस्तों को भेजा गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र में लातूर और कर्नाटक में चित्रदुर्ग में रैलियों को संबोधित किया। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में शमशाबाद में चुनाव सभा को संबोधित किया। कांग्रेस महासचिव और पार्टी की पूर्वी उत्तर प्रदेश की चुनाव प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने असम के हैलाकांडी जिले में रैली की। भाजपा के वरिष्ठ नेता और असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, पूर्वोत्तर लोकतांत्रिक गठबंधन NEDA के अध्यक्ष हेमंत बिस्वा शर्मा और राज्य के हथकरघा मंत्री रणजीत दत्ता ने भी अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। असम गण परिषद के नेताओं ने कालियाबोर समेत कुछ स्थानों पर प्रचार किया। इस बीच लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए नामांकन भरने का काम आज पूरा हो गया। इस चरण में देश के 9 राज्यों में 71 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में इस महीने की 29 तारीख को वोट डाले जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी और 12 अप्रैल तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार कार्य आज शाम समाप्त हो गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उम्मीदवार और उनके समर्थक घर घर जाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं। पुलिस ये सुनिश्चित कर रही है कि वो राजनीतिक कार्यकर्ता संसदीय क्षेत्र में मौजूद न रहे जो वहाँ के वोटर नहीं हैं। पड़ोसी राज्यों से सटी सीमाओं पर CCTV कैमरों के जरिए निगरानी रखी जा रही है। पहले चरण की 8 सीटों में जिन 96 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना है, उनमें 4 केंद्रीय मंत्री VK सिंह, संजीव बालियान, सत्यपाल सिंह और महेश शर्मा है। इसके साथ ही राष्ट्रीय लोकदल के नेता अजीत सिंह और जयंत चौधरी के साथ कांग्रेस के इमरान मसूद भी प्रमुख उम्मीदवारों में शामिल हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। असम में पहले चरण में लोकसभा की 5 सीटों लखीमपुर, तेजपुर, कालियाबोर, डिब्रूगढ़ और जोरहाट के लिए वोट डाले जाएंगे। ब्यौरे के साथ संवाददाता। सभी सीटों पर कांग्रेस और एनडीए के बीच सीधा मुकाबला होने की संभावना है। पूर्व मंत्री पवन सिंह घाटुआर, मौजूदा सांसद गौरव गोगोई और पूर्व IAS अफसर MGK भानु कांग्रेस के तरफ से मैदान में है। सोनोवाल सरकार के 2 मंत्री पल्लव लोचन दास और तोपन गोगोई के अलावा मौजूदा सांसद प्रधान बरुआ और रामेश्वर तेली भाजपा के तरफ से मैदान में है। असम गण परिषद के मौनी मानव महंत भी कोलियाबर सीट से मैदान में है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
लोकसभा के स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए निर्वाचन अधिकारी पूरी तरह तैयार हैं। तेलंगाना में पहले चरण के लिए बृहस्पतिवार को राज्य के सभी 17 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राज्य में लगभग 2,97,00,000 मतदाताओं के लिए 34,600 से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 25 महिलाओं सहित कुल 443 उम्मीदवार मैदान में हैं। निजामाबाद सीट से सबसे अधिक 185 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। पुलिस विभाग ने भी शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। हैदराबाद से लक्ष्मी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नईम अख्तर। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आम चुनाव से संबंधित विशेष चर्चा जनादेश 2019 प्रसारित कर रहा है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रतिदिन शाम 4:05 से 4:30 तक सुना जा सकता है। उत्तराखंड में 5 संसदीय सीटों के लिए लोकसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान होगा। वहां शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एक रिपोर्ट। प्रदेश की सभी 5 लोकसभा सीटों के लिए मोटे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। 5 लोकसभा सीटों के लिए इस बार 52 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इनमें केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा भाजपा से अल्मोड़ा सीट पर भाग्य आजमा रहे हैं, जबकि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत नैनीताल सीट से चुनाव मैदान में हैं। इस बीच राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। राघवेश पांडे, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में 7 सीटों के लिए भी पहले चरण में वोट डाले जाएंगे। गुरुवार को होने वाले पहले चरण के चुनाव में महाराष्ट्र के 7 सीटों पर भाजपा शिवसेना की युति के उम्मीदवारों की भिड़ंत मुख्यतः कांग्रेस एनसीपी के महागठबंधन के उम्मीदवारों से होगी। इन सीटों में सबसे अहम सीट है नागपुर, जहां केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद नितिन गडकरी के सामने होंगे पूर्व भाजपा सांसद नाना पटोले, जो इस बार कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। निशा रानी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। इसलिए खुशियाँ मना रहे हो चाचा? अरे बेटा, सेप्टिक टैंक का उद्घाटन जो है मिठाई खा कर जाना। चाचा, सेप्टिक टैंक ठीक से बनवाया ना? बेटा, जिम्मेदार हूँ, बस्ती वालों की सेहत का ख्याल है, इसलिए सेप्टिक टैंक का निर्माण सरकार द्वारा स्वीकृत मापदंड से बनवाया है। हाँ चाचा, बिना सोख पीट के सेप्टिक टैंक से गंदा पानी बाहर बहता है और भयंकर बीमारियाँ फैलाता है। याद रहे, सेप्टिक टैंक की नियमित रूप से सफाई करवाना। हाँ बेटा, ये सब न करना कानून का उल्लंघन भी है। अपने शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में अव्वल बनाए। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। आ गई। ये लो टिफिन और ये आई कार्ड भी। सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। रीना, मैं हमेशा सोचता हूँ कि अगर तुम ना होती तो मेरा ख्याल कौन रखता। पापा रुको, आज मम्मा आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज देना तो भूल ही गई और आप खुद भी लेना भूल गए। कौन सी चीज? पापा, आपका हेलमेट, ड्राइव करते हुए आपके सिर का सेफ्टी गार्ड। थैंक यू बेटा। थैंक यू मुझे नहीं, अपने हेलमेट को कहिए। करेक्ट, थैंक यू हेलमेट। हेलमेट पहनकर ही 2 व्हीलर चलाइए। जिंदगी है अनमोल, इसे यूं न गंवाइए। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। मेरे फादर इन लॉ को दिखाई नहीं देता। 1 साल पहले ग्लोकोमा के कारण उनकी देखने की शक्ति चली गई थी। उन्होंने बाहर आना जाना कम कर दिया, पर घर में सब ने उनकी सभी जरूरतों का पूरा ख्याल रखा। कुछ हफ्ते पहले उन्होंने बेसिक ब्रेल भी सीखी। अब वो कह रहे हैं कि हमेशा की तरह इस बार भी अपना वोट जरूर डालेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि मतदान केंद्र में ब्रेल ईवीएम की सुविधा है। इस बार मतदान केंद्र में होंगे व्हीलचेयर्स, रैंप्स, ब्रेल ईवीएम्स, स्पेशल वॉलंटियर्स और कई खास इंतजाम। मन बनाइए, सबको साथ लाइए, वोट कीजिए। अधिक जानकारी के लिए वोटर हेल्पलाइन 1950 पर कॉल करें। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा जिले के कवाकोंडा इलाके में आज शाम माओवादियों के हमले में भाजपा विधायक भीमा मंडावी और 4 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री भीमा मंडावी चुनाव प्रचार के बाद नकुलनार लौट रहे थे जब यह हमला हुआ। विधायक का काफिला जब कुआकोंडा थाना क्षेत्र में श्यामगिरी इलाके से गुजर रहा था, तभी रास्ते में घात लगाकर बैठे माओवादियों ने विधायक के वाहन को निशाना बनाते हुए बारूदी सुरंग का विस्फोट किया। विस्फोट करने के बाद माओवादियों ने विधायक और सुरक्षा कर्मियों पर अंधाधुंध गोलीबारी भी की। घटना के बाद अतिरिक्त बल इलाके में तैनात कर दिया गया है और सघन तलाशी अभियान जारी है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में माओवादी हमले की निंदा की है। अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा है कि इन शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि हमले में मारे गए भाजपा के विधायक भीमा मंडावी के निधन से उन्हें गहरा दुख पहुंचा है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में हुए माओवादी हमले को अत्यंत दुखद करार दिया है। एक ट्वीट में श्री राहुल गांधी ने हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दुख की इस घड़ी में शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में आतंकी हमले में गंभीर रूप से घायल आरएसएस नेता चंद्रकांत शर्मा की आज दोपहर बाद जम्मू में जीएमसी अस्पताल में मृत्यु हो गई। आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया गया है। हमले के बाद एहतियात के रूप में किश्तवाड़ शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि वोट डालना नागरिकों का पावन दायित्व है और हर एक नागरिक को राजनीति की गुणवत्ता बढ़ाने, लोकतंत्र को मजबूत करने और लोगों तथा राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए अपने लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग करना चाहिए। भारतीय प्रेस परिषद ने चुनाव संबंधी दिशा निर्देश जारी करते हुए किसी भी पार्टी या उम्मीदवार के खिलाफ बिना पुष्टि किए कोई आरोप छापने के खिलाफ भी अखबारों को आगाह किया है। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। हाय माँ, मैं बात करूंगी। सुनो। जी मैडम जी। बच्ची का ख्याल रखा है कभी? कहाँ रहती है? पैन कार्ड है? हमारे पास तो ये होता है। थैंक यू शीला। ऐसे कैसे भरोसा कर लिया? चोरी का भी तो हो सकता है। अच्छा, आधार? जी, आधार तो ऑनलाइन वेरीफाई भी हो सकता है। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो अब सोच लो मम्मी, फायदे में रहोगी। तो आप भी आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। भाई प्रिया, इतना लेट कैसे हो गया तुम्हें मीटिंग में आने के लिए? सर, रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया था, बिल्कुल मेरे सामने। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। न छोड़ के जाने की हिम्मत थी, न रुक पाने की, लेकिन मन नहीं माना। मैंने पुलिस और एम्बुलेंस दोनों को फोन किया और तब तक रुकी जब तक एम्बुलेंस उसे हॉस्पिटल नहीं ले गई। तो फिर इतना जल्दी कैसे आ गई? वही तो सर, पुलिस ने या किसी और ने कोई पूछताछ ही नहीं की। गुड प्रिया, अच्छा लगा देखकर कि इंसानियत अभी बाकी है। सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक घायलों की मदद करने वालों से पुलिस, अस्पताल या कोर्ट कोई सवाल नहीं पूछेगी। तो अपनी इंसानियत को मौका दे, बिना हिचकिचाए किसी की मदद करने का। अब सरकार आपके साथ है। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने आज जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल से मुलाकात की और यूरोपीय संघ से अपने देश के अलग होने यानी ब्रेक्जिट की योजना को 30 जून तक टालने का अनुरोध किया। वे आज बाद में फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों से भी मुलाकात करेंगी। कल ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक होगी, जिसमें ब्रेक्जिट की समय सीमा 12 अप्रैल तक बढ़ाने के श्रीमती टेरेसा मे के अनुरोध पर चर्चा होगी। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर कोलकाता नाइट राइडर्स से पहले बल्लेबाजी करने को कहा है। ताज़ा समाचार मिलने तक कोलकाता ने 12 ओवर में 6 विकेट पर 56 रन बना लिए हैं। टूर्नामेंट में कल मुंबई इंडियंस का सामना किंग्स 11 पंजाब से होगा। ये मैच रात 8 बजे से मुंबई में खेला जाएगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं हर्ष रंजन। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 239 अंक की बढ़त के साथ 38,939 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 67 अंक बढ़ा और 11,672 पर रहा। रुपया डॉलर के मुकाबले 37 पैसे मजबूत हुआ। $1 की कीमत 69 रुपए 30 पैसे रही। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार समाप्त। मतदान बृहस्पतिवार को होगा। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए निर्वाचन अधिकारी पूरी तरह मुस्तैद हैं। छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा जिले में नक्सली हमले में भाजपा विधायक भीमा मंडावी और 4 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले की निंदा की है। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे की ब्रेक्जिट समय सीमा बढ़ाने के लिए जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल से बातचीत। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला चेन्नई में जारी है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
Good evening. This is All India Radio and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Campaigning for the first phase of Lok Sabha polls ends, voting on Thursday. Election authorities fully geared up for conducting free and fair polls. In Chhattisgarh, BJP MLA Bhima Mandavi and 4 security personnel killed in a Maoist attack in Dantewada district. Prime Minister Narendra Modi condemns the attack. British Prime Minister Theresa May holds talks with German Chancellor Angela Merkel over delay of Brexit deal. And in IPL cricket, match between Chennai Super Kings and Kolkata Knight Riders underway in Chennai. Campaigning for the first phase of Lok Sabha polls ended this evening. Voting will be held in 91 constituencies spread over 18 states and 2 union territories in this phase on the 11th of April. All parliamentary constituencies of Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Andaman and Nicobar, Lakshadweep, Telangana and Uttarakhand will go to polls in this phase. Besides, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Jammu and Kashmir, Maharashtra, Manipur, Odisha, Tripura, Uttar Pradesh and West Bengal will also vote in the first phase. Simultaneously, voting for single-phase assembly elections in Andhra Pradesh, Sikkim, Arunachal Pradesh and for 28 of 147 seats in Odisha will also take place on Thursday. The election authorities have fully geared up for conducting free and fair polls on Thursday. Total 443 candidates are in the fray for 17 Lok Sabha constituencies in Telangana. This includes 25 female candidates, while Congress, BJP and TRS fielded 17 candidates each. CPI and CPIM fielded 2 candidates each. BSP fielded 5 candidates, while MIM fielded only 1 candidate. Telangana Chief Electoral Officer Dr. Rajat Kumar informed that all necessary arrangements have been put in place, including in Nizamabad, where 185 candidates are in the contest and 12 ballot units are being used. 2.97 crore electors will be utilizing their franchise at 34,604 polling stations. Meanwhile, Additional Director General of Police Jitendra said that Police Department has made elaborate arrangements for smooth conduct of elections. In Uttar Pradesh, as the cacophony of electioneering fell silent, candidates and their supporters are engaging in interpersonal canvassing now. More from our correspondent. CCTV cameras are installed at borders of neighboring states and teams of police personnel are deployed at the barriers to make sure that illegal liquor, weapons or unaccounted cash does not enter the constituencies. The first phase polling will decide the electoral fate of 96 candidates, including 4 union ministers, V.K. Singh, Sanjeev Balian, Satyapal Singh and Mahesh Sharma. RLD leaders Ajit Singh, Jayant Chaudhary and Imran Masood from Congress are other important leaders who are in fray. The 8 states which will go to poll on 11th April has a total of 1.5 crore voters, out of which more than 68 lakhs are female. Sushil Chandra Tiwari, AIR News, Lucknow. In Uttarakhand, voting for 5 parliamentary seats will be held in the first phase. All preparations for peaceful polling have been completed. More from our correspondent. There is a state contest between BJP and Congress in all the 5 Lok Sabha seats of the state. BJP had won all the 5 seats in the last elections. Congress is working hard to change this scenario this time. In all, 52 candidates are in the fray for the 5 seats. These include Union Minister of State Ajay Tamta from the reserved seat of Almora, while Congress General Secretary Harish Rawat is contesting from Nainital seat, with the election campaign coming to a halt this evening. Candidates and their supporters have engaged in door-to-door contact. Meanwhile, polling parties for far-flung areas have already been dispatched to their polling stations. Raghavesh Pandey, AIR News, Dehradun. In Assam, polling will be held at 5 seats: Lakhimpur, Tezpur, Kaliabor, Dibrugarh and Jorhat seats in the first phase. Our correspondent has filed this report.
75 lakh voters will decide the political fate of the 41 candidates, including 2 women, in the first phase of polls in Assam. All the seats are likely to see a straight fight between the Congress and the NDA. Former Minister Pawan Singh Ghatwar, sitting MP Gaurav Gogoi, and former bureaucrat MG VK Bhanu are in the fray from the Congress. Sitting MP Pradhan Barua and Rameswar Teli, along with ministers in the Sonowal government, Tapan Kumar Gogoi and Pallab Lochon Das, will try their luck from the BJP. Aham Gana Parishad Monimara Mohanto is also in the fray from the Koliabar seat. Manas Pratim Sharma, AR News, Guwahati. Meanwhile, filing of nomination also ended for the fourth phase of Lok Sabha elections today. 71 constituencies spread over 9 states will go to polls in this phase on the 29th of this month. Scrutiny will take place tomorrow, while April the 12th is the last date for withdrawal of candidature. Campaigning for the remaining phases of Lok Sabha elections has also gained momentum. The Election Commission today announced by-polls to 6 assembly constituencies spread over 3 states. These are Panaji in Goa, Kundugol in Karnataka, and Sulur, Aravakurachi, Tiruparam, Kundaram, and Ottapidaram in Tamil Nadu. Notification for the polls will be issued on the 22nd of this month, and candidates can file nominations till the 29th of April. Polling will be held on the 19th of May, and counting will take place on the 23rd of May. Panaji seat fell vacant due to the death of former Goa Chief Minister Manohar Parrikar. Sulur and Tiruparam Kundaram seat fell vacant after the death of sitting AIADMK MLAs R. Kanagaraj and A.K. Bose. Ahead of the first phase of Lok Sabha polls, the Election Commission transferred the Superintendent of Police of Cooch Behar district of West Bengal today. The Commission, in its order, transferred Abhishek Gupta and posted Amit Kumar Singh as the new Superintendent of Police of the district. The election in Cooch Behar parliamentary seat, along with Alipur Duar, will be held on the 11th of this month. Vice President M. Venkaiah Naidu has said that vote is a pious responsibility and everyone should exercise it to improve quality of the polity, strengthen democracy, and build a glorious future for individuals and the nation. In a message, Mr. Naidu said India is the largest democracy in the world and people must now make it the best democracy in the world. The Vice President said people have to exercise the right to vote, the right to choose, and the right to shape the quality of their polity. This is All India Radio giving you the news. For quick news updates, follow us on Twitter at AIR News Alerts. News Services Division of All India Radio is broadcasting a special live program, Janadesh 2019, on the developments related to the general elections 2019. Tune in to the FM Gold channel of AIR from 4:05 p.m. to 4:30 p.m. every day till the announcement of results to listen to this special program. In a massive Maoist attack, BJP MLA Bhima Mandavi and 4 security personnel were killed in Dantewada district of Chhattisgarh this evening. Maoists blasted an IED and then opened indiscriminate fire on a carcade of the MLA near Kuakonda area. The MLA was returning after election campaigning. More from our correspondent. The only MLA of BJP from Bastar region in Chhattisgarh, Bhima Mandavi, was returning to Nakulnar after addressing an election rally in Kirandul. Today was the last day of campaigning in Bastar Lok Sabha constituency, where the polling is scheduled to be held on April 11th. The incident took place at around 5 this evening when the Maoists triggered a blast targeting the convoy of MLA near the Shamgiri area. After the blast, Maoists opened indiscriminate fire. In the attack, MLA Bhima Mandavi and 4 police personnel were killed on the spot. After the incident, senior police officials rushed to the spot of the blast and massive combing operations have been launched. Vikalp Shukla, AIR News, Raipur. Prime Minister Narendra Modi has condemned the Maoist attack in Chhattisgarh. Mr. Modi paid tribute to the security personnel who were martyred in this attack. In a tweet, the Prime Minister said the sacrifices of these martyrs will not go in vain. Congress President Rahul Gandhi has termed the Naxal attack in Chhattisgarh as extremely painful. In a tweet, Mr. Gandhi paid tribute to those who lost their lives in the attack.
In Jammu and Kashmir, an RSS leader who was injured in a terrorist attack in Kishtwar district of Jammu division succumbed to injuries at GMC hospital in Jammu this afternoon. Terrorists had shot him along with his PSO, who was killed on the spot. Army has been deployed in the town and a massive hunt has been launched in the area to nab the terrorists. The Supreme Court has dismissed a petition seeking stay on the release of a biopic on Prime Minister Narendra Modi. The Apex Court said the petition is premature as the censor board has not yet certified the movie. The Apex Court bench, comprising Chief Justice Ranjan Gogoi and Justices Deepak Gupta and Sanjeev Khanna, said even if the film is released on April the 11th, it will be appropriate for the petitioner to seek a redressal from the Election Commission. Vice Admiral Bimal Verma has withdrawn his petition challenging his supersession for the post of Navy Chief after the Armed Forces Tribunal asked him to first approach the Ministry of Defence for redressal of his grievance. As per rules, Vice Admiral Verma had the option of filing a statutory complaint with the Defence Minister before taking the legal recourse. He had approached the tribunal challenging the appointment of Vice Admiral Karambir Singh as the next Navy Chief, replacing Admiral Sunil Lamba. At the stock markets, key indices rose today in a volatile trade on sustained buying in banking and auto stocks towards the fag end of the session, and the rupee snapped a 3-day losing streak against the dollar. A report. Sensex at the Bombay Stock Exchange gained 239 points or 0.6% to 38,939. Nifty at the National Stock Exchange rose 67 points or 0.6% to end at 11,672. At the Forex market, rupee surged 37 paise to 69.30 against the dollar. But gold slumped 235 rupees to 32,980 rupees per 10 grams in Delhi. And Brent crude futures gained 25 cents to trade at $70.85 a barrel. This is Lalema Aneja Dang for AIR News. The CBI today opposed the bail plea of RJD chief Lalu Prasad Yadav in the Supreme Court. He is serving a jail term in connection with fodder scam cases. The CBI told a bench headed by Chief Justice Ranjan Gogoi that Lalu Yadav would misuse the bail for political activities ahead of the Lok Sabha polls. The CBI also said that grant of bail in cases of corruption in high offices would set a very wrong precedent. British Prime Minister Theresa May held talks with German Chancellor Angela Merkel in Berlin today in a bid to delay the Brexit deal. Ms. May is also scheduled to meet French President Emmanuel Macron tonight in Paris to urge him to back her request to delay Brexit again until the 30th of June. EU leaders will meet in Brussels tomorrow to discuss Ms. May's request to move the Brexit deadline, which is set for April the 12th. Ms. May will be at an emergency summit tomorrow when all EU states will vote on an extension. UK lawmakers finally approved a Brexit bill yesterday after weeks of failing to reach agreement on May's proposals or any of the alternative models of leaving the EU. The bill aims to block a no-deal Brexit, whereby the UK crashes out of the EU without any transition arrangements in place. Faced with political deadlock in London, the EU agreed last month to postpone Brexit from March the 29th to April the 12th. In IPL cricket, the match between Chennai Super Kings and Kolkata Knight Riders is underway in Chennai. Put into bat, Kolkata Knight Riders was 76 for 7 in 15.3 overs when reports last came in. Both the teams have 8 points each on the points table, but Kolkata tops the table on the basis of net run rate. Tomorrow, Mumbai Indians will lock horns with Kings 11 Punjab at the Wankhede Stadium in Mumbai. The match will begin at 8 p.m. In football, the Indian women's team bowed out of the 2020 Olympic qualifying tournament in Mandalay today on goal difference, despite a 3-3 draw against Myanmar Eves. Both India and Myanmar were on 6 points from 2 games, but Myanmar enjoyed a better goal difference compared to India. India had begun their campaign with a victory against Indonesia 2-0 and thrashed Nepal 3-1 in the second game. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Campaigning for the first phase of Lok Sabha polls ends voting on Thursday. Election authorities fully geared up for conducting free and fair polls. In Chhattisgarh, BJP MLA Bhima Mandavi and 4 security personnel killed in a Maoist attack in Dantewada district. Prime Minister Narendra Modi condemns the attack.
British Prime Minister Theresa May holds talks with German Chancellor Angela Merkel over delay of Brexit deal. And an IPL cricket match between Chennai Super Kings and Kolkata Knight Riders underway in Chennai. And that is all in the news at 9. Good night. सूरज की खिलती पहली किरण के साथ आकाशवाणी अपने एक और नए अंदाज में दे रही है आवाज। डीटीएच यानी डायरेक्ट टू होम सेवा पर आप सभी का स्वागत है। गाता एक राम भक्ति संगीत, प्रादेशिक संगीत, विविध भारती एफएम के कार्यक्रम, प्रादेशिक समाचार और देश विदेश के समाचारों का भरपूर आनंद डीटीएच सेवा के साथ। आज की देश के किसी भी कोने में रहते हो आप, अपने ही राज्य से उस कोने में भी डीटीएच के माध्यम से जुड़ सकते हैं आप। बस डीटीएच सेवा का उठाए लाभ। आपकी हर सांस के साथ साथ डीटीएच सेवा 24 घंटे रहे आपके पास। डिजिटल क्वालिटी का ऐसा सुंदर प्रसारण और कहां, डीटीएच सेवा है जहां। This is All India Radio. In the program Spotlight, now we bring you a discussion on Homeopathy Convention, linking research with education and clinical practices. The participants are R.K. Manchanda, Director General, Central Council for Research in Homeopathy, and Chetan Chauhan, journalist. Dr. Manchanda, the first question is, if you can tell us, our listeners, more about homeopathy and how it has been doing in India. Homeopathy is a system of medicine that is practiced worldwide in about 80 countries in different forms. In India, it is very well developed and is recognized as one of the medical system along with other traditional Indian medicines like Ayurveda, Yoga, Unani and Siddha. So it is collectively known as Ayush. For giving emphasis for the growth of these system along with homeopathy, Government of India has established a separate ministry that is known as Ministry of Ayush. As regard homeopathy is concerned, in India, we have about 231 homeopathic medical colleges where almost 15,000 doctors pass every year. At present, our collective strength is about, you can say, 300,000 registered homeopathic doctors with different state governments, as well as we have a state boards. So we have around 300,000 homeopathic doctors in the country, and they constitute about, you can say, 37% of the total medical workforce of the country. If you compare it with allopathy, though it's the mainstream of medicine and medication in the country, how do you see that homeopathy has grown in the country in the last few years with the focus by the government putting out so much resources, new medical colleges coming up across India? So how the space for homeopathy has changed? I'll tell you, when India got independence, I think 1947, we had hardly 15 to 20 homeopathic medical colleges in the country. Now it is 231. So exponential growth is there, and in several surveys and all those studies are also keeps on happening, and there are publications. There is a shift of patients towards homeopathy. Why? Because it is safe, and for long-term use, it is definitely a good system. So our study concluded that patients, those who are having subacute problem and chronic problem, they tend to prefer homeopathy for long-term usage. But patients, those who are having acute problem, emergency problem where surgery is needed, they tend to prefer allopathic medicine. And even it was a very interesting study that even patients, those who are sometimes taking homeopathy in the long run and in between, they develop some acute problem, so they immediately shift to allopathy for some time and then they take. Another very interesting study was that there are certain diseases where if patient starts taking some medicine, like you are a long-term hypertensive patient and you have already anyhow started taking allopathic medicine for the treatment of hypertension, patient keeps on taking that also, and wherever required for other small things and other things, they prefer other system. The reason is, let there not be multiple medicines of the same time. So patients are, I have seen, are quite wise and very smart in using homeopathy. So as a result, there is a demand. Now out of these 300,000 homeopathic doctors, around 80% work in private sector and are serving patients day and out. Not like government coverage is hardly 15 to 20%,
but rest of the public directly use homeopathy. So that is why it is being preferred by. And another very good survey what we have seen, that people, those who use homeopathy, they are normally quite educated and they know about the system. That's the thing. In homeopathy medicine, which normally one question comes is the quality of medicines. So is there any agency in the government or to test the medicine which the doctors provide under homeopathy? Because in homeopathy you have to take medicines for a longer period as compared to allopathy or other forms of medication. So is there a system to test and have a basic minimum quality criteria? Yeah, absolutely. In India, we have a structured system for the registration of homeopathic medicines. Like the same agency, Drug Controller General of India, that regulates allopathy, they regulate homeopathy. In Drug and Cosmetic Act, there is a provision of regulation of quality of homeopathic medicine. There are good manufacturing processes, notification by the Government of India, which all the industry, those who are manufacturing homeopathic medicines, are required to follow. There are state drug authorities, control authorities, they do periodical checkup, periodical inspections to ensure the quality of homeopathic medicine. This is regarding quality. Another point which you mentioned, that patient necessarily need to take medicine for a long time. It is not the thing. It depends upon the disease. If the disease is of short duration, you need not to take homeopathic medicine also for all time or for longer period. It depends upon the case to case. Yeah, but as compared to allopathic, it is considered that in homeopathy, the medicines you will have to take a slightly longer duration. Because the diseases which we cater are either subacute or relatively chronic diseases. It is that perception is mainly because of that. One thing, the present government created this Ministry of Ayush, in which homeopathy was one of the key areas which the government of India identified. So what are the steps that the government has taken to promote homeopathy in the last 5 years? First of all, government has, by just making a separate ministry, decision making about the development of homeopathy has fastened. Now we have a separate secretary, and now more correctly a technical secretary who can understand all these problems very quickly and sort out the matters. At the same time, we have a separate minister, so all the cabinet decisions and all those things can be. So these things have been given prioritized, and there is a focused attention to develop homeopathy along with other Ayush systems in the ministry. So this is one step. The other is to popularize. Government of India regularly organizes at state level, at a district level, different health fairs, where we not only give training and information about how to be healthy, what kind of right food is needed, what kind of right exercise is needed, to what extent it is good. We do tell that how we can increase the usage of these Ayush systems, including homeopathy, in such situation, so that patient, if are given a get all right with natural medicine, there can't be better state than that. In addition to that, government has given funds for the infrastructure development of these systems. And the fourth step which government is consistently, and my organization where I work as Director General, is to research. That government is pushing for the research develop, for the strengthening the existing infrastructure of the research, so that in times to come we should have much more evidence what we have today. We are putting lot of effort to enrich the science of homeopathy by collaborating with multidisciplinary organizations. Oh, can you tell us more about research? Because in the normal medical science, there is a lot of research, a lot of work goes on. But in the area of homeopathy, people may not be aware what sort of research is being done. Because your council is equivalent to Council for Medical Research. It is on the similar lines, it works on the similar lines. So can you tell us that what sort of a research, which are the focus area of research in which the council is working? I'll tell you, Homeopathic Council is working in a very strategic manner. What we are having, we have identified certain areas where we feel in conventional medicine still not much treatment is available, like in the field of dengue, in the field of encephalitis, in the field of chikungunya, in the field of multi-resistance, emergence of multi-drug resistance bacteria. We are, on one hand, we are trying to work in these infective diseases where still conventional treatment and straightforward treatments are not available. We are trying to find out, can we have a clearly possibility of preventing some of these diseases, and if we can give homeopathic medicine, can we prevent and reduce the usage of platelets, reduce the stay of the patient. So one kind of studies are going on in infective area. The other is of non-communicable diseases. There we find that if a person today develops non-communicable disease, there is a vast time, like there is a great lag time, like when actually patients started developing that.
in the form of symptom. So that stage we normally see pre-diabetic stage, early diagnosis of cancer, early cases of hypertension. All these areas are very, very potential areas for the prevention of these diseases, for long-term usage of drugs in life. And also at that time, by giving right kind of health education along with some medicine, patient may not develop these kinds of diseases. Another area is non-communicable disease. Third area we are working in drug standardization. Whatever drugs which were developed several years back, what changes have occurred there. So what kind of drug standardization work is required to be done? Our laboratories are working on that. And fourth area is the existing literature of homeopathy, which is there, that needs to be validated and revalidated according to the modern times. Our focus is on one hand is to increase the success rate of average homeopathy practitioners, and on the other hand is that our medical colleges should produce confident and competent homeopathic doctors. So you're also working on the syllabus for the medical colleges, or some other body works on that? No, for that in India we have a separate statutory body that is known as Central Council for Research in Homeopathy. So you can say shoulder to shoulder with them. But syllabus making and regulation of education is different. As today, as we all know, that World Homeopathic Day, this is celebrated world over to commemorate the birth anniversary of its founder, Dr. Samuel Hahnemann, who himself was a German physician and was quite fed up by the system of that time, and he discovered the new system, and now since then it is practiced all over the world in different forms. So this time we are working on a theme linking homeopathic education and clinical practice with research. You spoke about dengue, chikungunya. They are the diseases which a large number of people in many parts of India suffer, and the cost of treatment through allopathy is high. It is considered very high. So you've been able to make some sort of a breakthrough in treating patients or of dengue, chikungunya? We have recently publication also where we have demonstrated that in a case control study, how by use of homeopathy we can reduce the hospital stay as well as we can reduce the platelet usage. But this we have done in an allopathic hospital, this kind of study. But overall, if we scan through the traditional literature of homeopathy, there are references for the successful treatment of these cases. And average homeopathy practitioners in India has sufficient experience to treat such patients. So I have seen many people opt for these homeopathy whenever they suffer from these diseases. At least even if they have to take something conventional for short-term relief, they prefer to take homeopathic side by side so that at least they can prevent some side effects and some later effects of these diseases. As regard prevention is concerned, we often issue advisory also. On the basis of existing data we have seen that people, those who have taken homeopathic medicine, you can say they reduce the intensity of the disease in a patient. So we are working on those areas. It is World Homeopathy Day. So can you tell us all over the world how homeopathy has been accepted? Though in many countries it's highly acceptable, but in some countries the acceptability is low. So how the homeopathy medicine has grown, the field has grown in the last few years across the world? Homeopathy was discovered in Europe, I think, about 250 years back. But when it was discovered, it was found that it is a very novel type of system. And that was the time when in allopathic system so much research was not available. So this Dr. Hahnemann himself was an allopathic physician. He discovered this system. He could put few things into this system, and I would say that why we commemorate his birth anniversary is because that was the man who was much ahead of his time. He could foresee that what kind of system a human require. Number one, the system should be relatively gentle. The system should be relatively having no side effect, no toxic effects, and patient should be able to take easily, and there should be some human experimentation before we use in humans. That was a time when allopathic system of medicine was not that well developed. So as a result, when it was discovered, there were no vaccines at that point of time. There were no preventive measures. Humanity was in the grip of several infections. Plague was there, smallpox was there, chickenpox, so many infectious diseases were there in this world. So when homeopathy was discovered, this was considered to be a very good alternative and at least a new direction to the allopathic system of medicine. So as a result, immediately spread to US, spread to different parts of the Europe and to Asia. Dr. Manchanda, thanks a lot for coming to the studio. Thank you. You are listening to a discussion on Homeopathy Convention, linking research with education and clinical practices.
The participants were R.K. Manchanda, Director General, Central Council for Research in Homeopathy, and Chetan Chauhan, journalist. This program was produced and presented by the News Services Division of All India Radio. This program is also available on our website, newsonair.nic.in. You may email your opinion about this program at airnsttalks@gmail.com. In this special bilingual program, now we bring you a discussion on political developments of the day. The participants are political analysts Ashok Tandon and Anant Bagetkar. Ashwini Shrivastava, journalist, initiates and moderates the discussion. As per the election schedule announced by the Election Commission, first phase of polling will be held on April 11, that is Thursday. Today was the last day for the campaigning of the first phase of polling, and the nomination for the fourth phase of polling, which will be held on April 29. Today was the last day for the filing of the nominations. Before we go into detail about the various matters related to the elections, Ashok ji, please give us an overview of the election scenario in the country and how the political parties are doing their bit to woo the voters this time. As we know, the elections are being held in 7 rounds, and the first round of polling, as you said, will be held on the 11th of April. 91 Lok Sabha seats will be going to the poll, and these include all the 25 Lok Sabha seats in Andhra Pradesh, and where the simultaneous poll is also being held for the state assembly. So in one phase, the entire Andhra elections will be completed, and the campaigning in Andhra ended today. There we know that the main contest is between Chandrababu Naidu's TDP and the YSR Congress Jagan Mohan Reddy. It's a rather very tough fight between the two regional parties, but nevertheless both the national parties, particularly the Congress and Bharatiya Janata Party, they are also in the fray. They are contesting this election, but apparently it seems that the state of Andhra earlier, which was combined before they separated Telangana, 42 seats are there in these two states, and surprisingly the national parties don't have much of stake in these two states. So therefore regional forces, particularly in Andhra, they will be seen because they may be playing a very crucial role in the post-election scenario. So therefore the election in Andhra is very significant, and similarly assembly poll in Andhra also, because Jagan Mohan Reddy will be challenging Chandrababu Naidu, who has been in power for the last 5 years. So that is the scenario in Andhra Pradesh. अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में दिल्ली से लगे हुए 8 असेंबली सेगमेंट का चुनाव 11 अप्रैल को होगा, जिसकी कैंपेनिंग आज बंद हुई है, और उसमें कई बहुत ही रोचक मुकाबले होने वाले हैं, जैसे दिल्ली से सटा हुआ नोएडा और साथ में गाजियाबाद, दोनों जगहों पर केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा नोएडा में और जनरल वीके सिंह गाजियाबाद में फिर से चुनाव लड़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं अपनी सीट रिटेन करने की। और आगे बढ़े तो मेरठ, उसके बाद बागपत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, कैराना, ये सब सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पहले राउंड में जा रही हैं। और अजीत सिंह, चौधरी चरण सिंह के बेटे, वो मुजफ्फरनगर से लड़ रहे हैं, और उनके जो बेटे हैं वो बागपत से लड़ रहे हैं। जयंत सिंह, जो चौधरी जयंत जो हैं, वो पिछली बार मथुरा से लड़े थे, जहां वो हेमा मालिनी से हार गए थे। इस बार वो वापस अपने घर आए हैं, बागपत चौधरी चरण सिंह का गढ़ रहा है, तो वहां पर वो सत्यपाल सिंह जो केंद्र में मंत्री हैं, उनके साथ उनका बड़ा कड़ा मुकाबला है। तो हम देख रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत ही रोचक संघर्ष होने वाला है, जिसके लिए मतदान 11 अप्रैल को होगा। Anand ji, Ashok ji talked about elections in Andhra Pradesh. Of course, whole country is looking at this election. Do you feel there is a new entrant, Pawan Kalyan? He is an actor turned politician who has come into Andhra Pradesh politics. His entry will dent the prospect of others to regional parties? Yeah, because Pawan Kalyan has entered into the fray of elections in Andhra, and it has turned that election in a
we cannot say it will be a three-corner because the main contestants are YSR Congress and Telugu Desam, Chandrababu Naidu of Telugu Desam and Jagan Mohan Reddy of YSR Congress. But obviously the tussle is very close, fight is very close, and sometimes in politics even the smaller parties, they get that balancing factor. So one has to see whether Pawan Kalyan and his party, which he has floated recently, will really play a role of a balancing force. So one will have to see how election results throw the outcome. अशोक जी, आंध्र प्रदेश के साथ तेलंगाना की 17 लोकसभा सीट्स पे भी चुनाव अप्रैल 11 को होने हैं। इसी के साथ उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पे भी मतदान अप्रैल 11 को ही होना है। कितना महत्वपूर्ण है यहाँ का मतदान? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि आंध्रा और तेलंगाना दोनों मिलाकर 42 लोकसभा की सीट हैं और उसमें जहाँ तक आंध्र में भी क्षेत्रीय दलों में संघर्ष हो रहा है, जैसा भी बताया वाईएसआर कांग्रेस में और टीडीपी में, इसी तरह से तेलंगाना में भी तेलंगाना राष्ट्रीय समिति का मुकाबला हो रहा है। वहाँ पर कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और भी कुछ एक दल हैं जो तेलंगाना में चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन पिछले चुनावों में बहुत सालों तक हमने देखा, जब आंध्रा एक राज्य था तो इन 42 सीटों में कांग्रेस पार्टी को बहुत भारी मात्रा में सफलता मिलती थी। यहाँ तक कि 1977 में जब जनता पार्टी सारे देश में स्वीप की तो आंध्र में कांग्रेस का होल्ड रहा। लेकिन जब से हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी को वहाँ काफ़ी नुकसान हो रहा है और आज जिस स्थिति में आंध्रा और तेलंगाना का चुनाव हो रहा है तो कांग्रेस को वहाँ पर कोई बढ़त मिलने की गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही है। और इसी तरह की स्थिति कुछ भारतीय जनता पार्टी की है। 2014 में तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट और आंध्रा में 2 सीट मिली थी। तो इस बार वो इस क्षेत्रीय दलों की लड़ाई में कहीं ना कहीं दोनों राष्ट्रीय दल जो हैं वो कमज़ोर पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तेलंगाना और आंध्र की राजनीति का एक विशेषता हमें आज देखने को मिलती है। उत्तराखंड की जहाँ तक बात है तो उत्तराखंड की सारी सीटें पिछली बार 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और कांग्रेस का बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गया था वहाँ पर। और जबकि उत्तराखंड है वहाँ पर दोनों राष्ट्रीय दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला होता है। वहाँ पर कोई क्षेत्रीय दल नहीं है और बसपा का भी कोई बहुत बड़ा वहाँ पर होल्ड नहीं है। लेकिन वहाँ पर इस बार भी दोनों दलों में, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में, कांटे की टक्कर है और इसलिए उत्तराखंड का चुनाव में महत्वपूर्ण रखता है। और वहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो खंडूरी थे जो पिछली बार वहाँ से जीते थे, इस बार खंडूरी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनका बेटा कांग्रेस में शामिल हो गया है। और इसी तरह से हम ये भी देख रहे हैं कि निशंक को फिर से वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड का चुनाव भी बाइपोलर है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में सीधी टक्कर है। आनंद जी, उत्तराखंड की अगर हम बात करें, वहाँ पे बीजेपी की सरकार है, त्रिवेंद्र सिंह रावत वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और नरेंद्र मोदी भी वहाँ पे बहुत फ्रिक्वेंटली अपनी पोल रिलीज कर रहे हैं। हाल ही में टेरर स्ट्राइक जो किया हमने अक्रॉस द बॉर्डर, उसके भी बारे में अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जहाँ के लोग फौज में जाते हैं। आपको लगता है कि ये टेरर स्ट्राइक का कुछ असर उत्तराखंड के पोल में भी देखने को मिलेगा? मैं उत्तराखंड की सिर्फ बात नहीं करूंगा, क्योंकि अगर उत्तर हिंदुस्तान की अगर हम बात करेंगे, गुड फिक्शन राइटर, दैट वाज द सर्टिफिकेट गिवन बाय माय फादर। देन आई continued writing story and after that I switched over to I again needed more bigger canvas. It doesn't mean that if you expand a short story it will be novel, or if you shorten a novel it will be a short story. It is not that. You cannot make all the themes a short story or a novel. Some themes, some incidents, they need to be expressed in story, some need to be expressed in novels. So simultaneously I started writing stories and I wrote my first novel during my college days also. Madam, it is said that your writings voice the voiceless also. Could you please tell us a little more about that? That is the aim of all writers. I will tell you, writers are fighters, definitely. You have introduced me. True. Writers are fighters and writers are rebels, definitely. Rebels against what? Not against everybody. Against injustice, against discrimination, against any odd, any bad things into society, any dogma.
they hammer on those things. Therefore, I was like that from the beginning. The age in which I started writing a novel, definitely that is love story. In those novels, initial novels, it is against some inhumanity towards the lovers or towards some customs or the marriage.
establish world peace. Women must come out. They must teach the world. Madam, it takes many sleepless nights to become an adored writer with a distinctive style. At any time in your career, was there any phase when you felt diffident or not very sure about yourself? If so, how did you overcome it? To be very frank, those 7-8 years, I was feeling very diffident that whether the writer in me will ever come out and become a writer. Whether I will live as a writer or I will live as a machine to produce children. I was very angry with everybody. What to do? All my in-laws having 6 sons, 5 sons, like that. However, at that time I was feeling diffident, seeing my other colleagues, those who were in a better position and they were writing and publishing books, and I have stopped writing at that time. That was the most difficult time for me. But after that, I became strong. That silence made me very, very strong and determined. And I don't say that I am a good writer or a bad writer, but I am a writer. I am writing. I don't judge my writing. I write, I get pleasure from writing, and my readers are very, very kind to me. They love me very much. I don't know whether you know or not, it came in paper. That novel, Jagyaseni, completed 100th edition last year. So it is the first novel in Odisha to be in the 100th edition, and now it is going to be 101 edition. If you ask me, why do you write and how do you write? These questions are often asked to writers. Why do you write? You know, this is the urge, the instinct, the impulse, and passion. Writing is not a profession. I had other professions, but writing was my passion. So nobody can stop me. Madam, what would you attribute your success as a writer to? Is it hard work, inspiration, or simple luck? Simple luck, though, I never accept simple luck. Success, I don't know what do you mean by success. If you mean success, getting all the awards or all the things, I am not agreeing with you. Success means I consider living as a writer till today. I am still writing. You said there, she has completed 23 novels, still writing. Why the question of still writing? I will go on writing till my last breath. That is my prayer. And writing for me a life breathing. It is my life. What would you advise the young writers today to follow or not to follow about you? Why should they follow me? They should follow their dreams. They should pursue their dreams. Every person has his or her own dream. If their dream is to become something, whether writer or scientist or whatever it may be, they should pursue their dreams, follow their dreams, and they should create footprints for others. Today, it has been really wonderful listening to you. You opened out quite a chunk of yourself. That's what I got. One thing, I will end telling one thing. Camus, you know, the French writer Camus said, every writer is always engaged in a culpable rivalry with God. They challenge the God. Writers are the gods to challenge the God. God, you have created a very beautiful world, but there are some ugliness. We want to create another world where there should not be this ugliness. So writer's vision is to create a better world through their writing. I don't know whether the readers follow it or what is the impact of the writing on them or on the society. But I don't believe that social change or any change in the society through literature comes overnight. It takes time. If 5 persons are impressed or they develop a character reading your novel or story, then you are successful. Madam, one last question to you. Which event or experience or book or thinking do you think has gone to make Pratibha Rai what she is today? A single person, a single book, single event cannot make even Professor Rajanikanth Nayak. So there are so many things, impact of many things, your parents, your teachers, and the nature, the river, the hills, the birds, flower, and the ugliness of the society, all the things. The world is a book. If you are able to read the book of world, then definitely
you become, what you want to become. But do you think that I have become Pratibha Rai? I am very unsatisfied. All the writers are very unsatisfied. After completing a novel, I think that it is incomplete. And I tell my readers, they say that, why did you do the ending like that? You should continue like this. I said that all my novels are incomplete and please complete it. Because somebody told the writer begins a book, the reader ends it. It has been really wonderful listening to you today, and I will wish you many, many more years of exploration and writing with fulfillment, writing with satisfaction. Thank you so much, ma'am. Thank you. You were listening to an interview entitled Pratibha Rai, The Writer is a Fighter, in which Dr. Pratibha Rai, academician, former member, Public Service Commission of Odisha, and Gyanpith awardee, was in conversation with Dr. Rajnikanta Nayak, former professor, English, Ravenshaw University, Cuttack. Produced by Narendranath Patnaik and Randeep Pradhan, this program was a contribution of AIR Cuttack in our national program of talks and came to you from the Delhi station of All India Radio.